Dear students, this is Imran Kazmi and we are going to start our fifth lecture of Programming Fundamentals. We have been studying control instructions in our previous classes, and in the last lecture we have covered if statement and if else statement. In today's lecture, we are going to study nested if, switch statement, and conditional operator. All these categories fall in the category of control instructions, and we are studying sequence control instructions over here. So, we are going to study nested if, switch, conditional operator. These all statements belong to control instructions. First of all, we are going to study nested if. Nested if, when there are another if else statement in if block or else block, then it is called nesting of if else statement. Nesting means statement within another statement. So if we have a block of if statements and similarly a block of else statement, and in this block if we have another if, then the inner if would be called as nested if. So if within if statement would be called as nested if. For example, if age of a student is greater than 18 and height is greater than 5, then statement 1, 2 and 3 would be executed. So if there are two checks, first check is on age and the second check is on height, then statement 1, 2 and 3 would be executed. So if first condition gets true, if age is greater than 18, then control enter in the if block, and when it enters, it came to know that another if is present over there, and the other if is based on height, and this condition is that if height is greater than 5, then statement 1, 2 and 3 would be executed. So to execute statement 1, 2 and 3, both these conditions must be true, but before checking the height, the age must be verified, that if age is greater than 18, then control would enter into the if block. But if the age condition gets false, let's say the age is lesser than or equal to 18, then the inner condition would not be checked and statement 1, 2 and 3 would never get executed in case the first condition gets false. But if it gets true, then height condition would be checked. So if within if would be called as nested if. We have another form of nested if named as if else ladder. In this type of nesting, there is an if else statement. In every else part except the last part, if condition is false, control pass to block where condition is again checked within its if statement. The general syntax is given over here. For example, please focus. If condition 1, statement 1, else if condition 2, statement 2, else if condition 3, statement 3, else statement 4. Every condition, condition 1, condition 2, condition 3, condition, all these three conditions have their relevant statements, and in case all these conditions gets false, then the control is transferred to the last else and statement 4 would be executed. The simple how this if else work would be as like this.
that if condition 1 gets true, the statement 1 would be executed and other condition would never been checked. Control wouldn't check condition 2, condition 3 or any other condition if the first condition, condition 1 gets true. If condition 1 gets true, only statement 1 would be executed and the remaining two conditions would be left without execution. So if the condition 1 gets false, control goes to else if condition 2. So in case the condition 1 gets false, control then goes to condition 2. And if this condition 2 is true, then statement 2 would be executed. And if condition 2 is false, then control goes to third condition, else if condition 3. And if condition 3 is true, then statement 3 would be executed. And if the condition 3 is also false, then control would go to statement 4. इस सूरत हाल में होता इस तरह से है, इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है कि अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो पहली स्टेटमेंट या उसके जो डिपेंडेंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी सारा प्रोसेस जो है उसको चेक नहीं किया जाएगा, कंट्रोल उसकी एग्जीक्यूशन चेक नहीं करेगा इन केस के फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है. लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगी तो फिर कंट्रोल जंप करके फर्स्ट एल्स इफ पे आ जाएगा और कंडीशन 2 को चेक करेगा और अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाएगी तो फिर कंडीशन 3 चेक नहीं होगी और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी. लेकिन अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाती है फिर थर्ड कंडीशन की तरफ कंट्रोल जाएगा और वहां पे मौजूद स्टेटमेंट को चेक करेगा. अगर कंडीशन 3 ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी. लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कंडीशन 2 की तरफ आएगा. अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कंडीशन 3 की तरफ आएगा और अगर कंडीशन 3 भी फॉल्स हो जाती है तो लास्ट एल्स में चला जाएगा. और लास्ट एल्स का मतलब ये है कि इससे पहले आने वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं. अब कंट्रोल फॉल्स होने की सूरत में उसके पास कोई भी कंडीशन है तो उसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट 4 जो है वो एग्जीक्यूट करेगा. लास्ट एल्स के लिए कोई कंडीशन चेक नहीं की जाएगी. लास्ट एल्स का मतलब ये होगा कि इससे ऊपर आने वाली जितनी भी कंडीशन हैं, ऑल दोज कंडीशंस गेट्स फॉल्स, देन the last else would be executed and statement 4 would be executed. So keep in mind that statement 4 would only be executed when condition 1, 2 and 3 would get false. But if any of the condition like condition 1 or 2 or 3, any of the condition get true, the relevant statement would be executed and last else would never get execution. So the last else is the only else when all the above condition gets false. We have another control statement named as switch statement. This is also an alternate of if else statement, but its syntax is quite different. The control statement that allow us to make a decision from the number of choices. In switch statement, it works on number of choices, but choices are based on some integer expression. In switch statement, we simply give an integer expression and the value of the integer expression is checked for each case. For example, the value of the integer expression is checked for first case, and if the case is true, the value of the expression matches the first case, then the statement 1 would be executed. And in other case, if the integer expression doesn't match, the second constant is checked, and if it simply matches, then statement 2 would be executed. And similarly, it would match it with the case 3, and if it matches with case 3, then statement 3 would be executed. So the only statement or group of statement would get executed whose
case simply matches the integer expression. But in case all the case constant doesn't match the integer expression, then default statement would start its working and statement 4 would execute. So over here default is just like your else statement. Default only starts its working when the all of the above cases gets false. If any of the case matches the integer expression, then the relevant statements would be executed and control wouldn't enter the default. कंट्रोल कभी भी डिफॉल्ट में एंटर नहीं होगा इफ अगर कोई भी केस आपका जो है वो इंटीजर एक्सप्रेशन के साथ मैच कर जाता है, लेकिन अगर आपका केस एक भी केस किसी इंटीजर एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करता तो उस सूरत में डिफ़ॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी. एंड डिफ़ॉल्ट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे एल्स करता है. इसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं होती. इसका मतलब ही ये होता है कि पहली तमाम कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हो गई हैं, तो अब जो है वो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि इसे किसी कंडीशन फर्दर की ज़रूरत नहीं है. इन अदर केस ये फिर स्टेटमेंट 4 या जो भी इसकी रेलिवेंट स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेगा. फॉर एग्जांपल स्विच स्टेटमेंट के लिए मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए सिंपल सी रखी है. For example, if we have int I is equal to 2, over here the value of I is equal to 2, switch is placed on this value. Integer expression over here is I is our integer expression, mean the value of I would be checked for each case. So when the control enter the switch statement, we have three cases, case 1, case 2, case 3. If the value of I is equal to case 1, then the statement of case 1 would be executed. And if the value of I matches to the second case, so the statements of second case would be executed. And if the value of I matches the case 3, then the value of or the statements of case 3 would be executed. So over here the value of I is equal to 2, it means it matches the second case, so India would be displayed. But if the value of I is equal to 1, Pakistan would be executed. And if the value of I is equal to 3, England would be executed. So if the value of I is neither 1 nor 2 nor 3, then the default would be executed and USA would be displayed. So in this case value of I simply second case से मैच कर रही है, तो second case वाली statements execute होंगी, case 1 और case 3 वाली statements execute नहीं होंगी और डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर कोई केस मैच कर जाता है. लेकिन अगर आपका कोई केस मैच नहीं करता, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू अदर देन 1, 2 एंड 3 है, तो उस सूरत में कंट्रोल डिफ़ॉल्ट में जाएगा और डिफ़ॉल्ट में मौजूद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में यूएसए है, तो अगर आई की वैल्यू 1, 2 और 3 के अलावा है तो फिर यूएसए एग्जीक्यूट होगा. बट इफ द वैल्यू ऑफ आई सिंपली मैचेस एनी ऑफ द केस, then the relevant statement of that case would be executed. Another sequence control operator is available over here, named as conditional operator. Conditional operator also works like if-else statement. It is sometimes called as ternary operators. Ternary mean it requires 3 expressions, or you can say 3 expressions as operand. Mean जो conditional operators होता है ये 3 operands पे काम करता है.
And conditional operator is not a single operator, rather conditional operator is a composite of sign of interrogative and colon. Both these operators, sign of interrogative and colon sign, both these operators are combined to form a conditional operator. The general syntax of conditional operator is expression 1, sign of interrogative, expression 2, colon, expression 3. So the working of conditional operator is like this. If the expression 1 gets true, the returned value would be the value of expression 2. And if the expression 1 value gets false, the returned value would be the value of expression 3. So the value returned is based on expression 1. If it is true, then the returned value is from expression 2, and if the expression 1 is false, then the returned value is expression 3. For example, if we have two integers a equal to 10 and b is equal to 2, and we have another integer s where s is equal to a greater than b, sign of interrogative, a colon b. So in this statement, a greater than b is your expression 1. This one, expression 1 is a greater than b. Sign of interrogative, expression 2, over here expression 2 mean a, colon b, b is your expression 3. So the value of s depend upon this expression 1, that is a greater than b. If the value of a is greater than b, then this expression is true, and the returned value would be the value of a. And if the expression a greater than b gets false, then the value of s or the returned value of this expression would be the value of b. So which value would be assigned to s depend upon this expression. If the expression is true, the value of a would be assigned to the s, and if the expression a greater than b is false, the value of b would be assigned to the s. So यहाँ पे s की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है इस एक्सप्रेशन के. अगर a ग्रेटर देन b आता है तो ट्रू होने की सूरत में a की वैल्यू s को मिलेगी और फॉल्स होने की सूरत में b की वैल्यू s को मिलेगी. तो चूंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b एक्सप्रेशन ट्रू आ रहा है. तो जो दो वैल्यू आपको असाइन होगी s को, वो वैल्यू ऑफ a होगी, सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू. तो सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके पास a है, तो a की वैल्यू 10 है, तो 10 जो है ये s को असाइन होगी. लेकिन अगर ऐसा ना होता, a की वैल्यू b से ग्रेटर ना होती, तो फिर s को b की वैल्यू मिलनी थी. लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 2 है, तो पहला एक्सप्रेशन a ग्रेटर देन b ट्रू बन रहा है, और ट्रू होने की सूरत में जो सेकंड एक्सप्रेशन है दैट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट वुड बी असाइन टू द s. और इसको जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो इसका आउटपुट जो आएगा दैट वुड बी 10, बिकॉज s की जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी आपकी a वाली. तो a की वैल्यू 10 है, तो वो 10 ही जो है वो s को असाइन होगा. लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती तो b की वैल्यू असाइन होनी थी. लेकिन यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, इस वजह से a की वैल्यू जो है वो s को असाइन हुई और वो वैल्यू डिस्प्ले भी होगी. अब मैंने आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स का अरेंजमेंट किया है.
क्योंकि यहाँ पे हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट हो रही हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कुछ असाइनमेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। जब ये आप असाइनमेंट्स कर लेंगे तो हम जो सेकंड पार्ट है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का, नेम्ड एज लूप कंडीशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। तो चूंकि फर्स्ट पार्ट जो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दीज assignments, exercises, then we would start our next part of control instruction. So let's focus on the first assignment. Write a program that input number of weekday and display the name of the day. For example, if user enters 1, it would display Friday, and so on. Mean, if user enter 1, the result should be displayed as Friday, and if it enters 2, then it should display the next day of your week. So if enter 1 Friday, if enter 2 Saturday, if enter 3 Sunday, if enter 4 Monday, if enter 5 Tuesday, if enter 6 Thursday, and if it enter any of the number which doesn't belong to the week, the message should be displayed like wrong number has been entered. We need to use switch statement to develop this program. इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने स्विच स्टेटमेंट के जरिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, जिससे यूजर से एक नंबर इनपुट करवाया जाएगा और ऑन बिहाफ ऑफ दैट नंबर वीक का जो डे होगा वो डिस्प्ले होगा। जैसे फर्ज करें कि 1 एंटर हुआ है तो 1 के लिए फ्राइडे आपने रखा है तो फ्राइडे डिस्प्ले होना चाहिए। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप 1 के लिए फ्राइडे रखते हैं या 1 के लिए मंडे रखते हैं। यू कैन प्लेस इवन मंडे फॉर 1 and for 2 Tuesday, for 3 Thursday, Wednesday, for 4 Thursday, for 5 Friday, for 6 Saturday, and for 7 Sunday. So 1 to 7 you have numbers and the relevant day should be displayed. But if the user enter other than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, other than these 7 numbers, the user enter 8 or any other number, then the message should be displayed that the user have entered a wrong number. So you have to develop this program using switch statement. The second assignment is write a program that input 2 numbers and an operator. Operator mean arithmetic operator, plus, minus, direct and slash division के लिए. In case the operator is plus, addition of 2 number is calculated. For direct multiplication would be calculated. For minus, subtraction would be calculated, and for slash division should be there. So the arithmetic operation would depend on the arithmetic operator the user would enter. If the user would enter plus, the addition of these numbers would be calculated, and if the user enter minus, subtraction, and if the user enters direct, the multiplication would be calculated, and if the user enters slash, then division should be there. So it would work like an calculator. The arithmetic, the only operation would be calculated depend upon the user option, whatever the operator user would enter. Depending upon the user entered operator, the operation would be calculated. यहाँ पे आपने ये जो एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है, ये 2 तरीकों से बनाना है। इसमें आपने स्विच स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करना है
और इसको स्विच के ज़रिए कंप्लीट करना है, और स्विच के बाद इसको इफ एल्स से भी करना है। तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि एक प्रोग्राम को डेवलप करने के कई तरीके हो सकते हैं, लॉजिक हर एक की दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह से एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वाली जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2, ये स्विच स्टेटमेंट से भी आप कर सकते हैं, इफ एल्स से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा सादे इफ से भी, सिंपल इफ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये जो टास्क है एक्सरसाइज 2, इसको दो मेथड से करने के लिए कहा है। इसको पहले आप स्विच स्टेटमेंट से कंप्लीट करेंगे और फिर आप इसे इफ एल्स से करेंगे। मीन एक्सरसाइज 2 इज अ ड्यूअल प्रोग्राम। इन अदर केस आपने इसे स्विच से अलहदा करना है और इफ एल्स से अलहदा कंप्लीट करना है। मीन एक्सरसाइज 2 जो है ये आपके दो प्रोग्राम हैं, एक प्रोग्राम नहीं है। सिमिलरली असाइनमेंट 3, write a program to check whether a triangle is valid or not while three angles of the triangle is input through the keyboard. Triangle is valid if the sum of the triangle is equal to 180 degree. In assignment 3, you have to enter three angles and you need to check whether it is a valid triangle or not. The validity of the triangle is given that the sum of the angles should be equal to 180. The triangle which have value lesser than or greater than 180, the sum of angles, that would not be considered as valid triangle. So for valid triangle, it has to be the sum of angles has to be equal to 180. Lesser or greater than 180 sum would not be a valid triangle. So exercise 3 में आपने 3 एंगल्स की वैल्यूज इनपुट करनी है और उसके बाद ये चेक करना है कि ट्राइंगल वैलिड है या नहीं है। वैलिड ट्राइंगल के लिए जो पैरामीटर है वो ये है कि एंगल्स का जब आप सम करें दैट शुड बी इक्वल टू 180। अगर आपके एंगल्स का सम 180 से बढ़ जाए या उससे कम हो जाए तो वो आपकी वैलिड ट्राइंगल नहीं रहती। सो द वैलिडिटी ऑफ द ट्राइंगल would be checked on behalf of the sum of the angles that the user would enter. If the sum of the angles is equal to 180, then the triangle is valid, and if it is not equal to 180, then it is not a valid triangle. Now comes to fourth assignment. Write a program to calculate the roots of the quadratic equation while the value of a, b and c is input through the keyboard. All cases should be discussed. b square minus 4ac greater than 0 first case, b square minus 4ac lesser than 0 second case, b square minus 4ac equal to 0 third case. So dear student, whenever you need to calculate the roots of the quadratic equation, you may have to face three cases: b square greater than b square minus 4ac greater than 0, b square minus 4ac lesser than 0, b square minus 4ac equal to 0. So in the first case, b square minus 4ac greater than 0, two roots would be calculated, and in the second case, b square minus 4ac lesser than 0, imaginary roots would be calculated. Because lesser than 0, you cannot take direct square root, you have to go for the iota value. So for b square minus 4ac,
lesser than 0 mean imaginary value would be calculated, and if b square minus 4ac is equal to 0, then only one value would be calculated, only one root would be calculated. So the value of a, b and c the user would input, and first of all the user would calculate the value of b square minus 4ac. Then all these three checks would be placed. In case the value of b square minus 4ac greater than 0, case 1, b square minus 4ac lesser than 0, roots imaginary, case 2, and case 3 is b square minus 4ac equal to 0. आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर दी है, सिंपल कैलकुलेटर वाली। इसमें आपने काम इस तरह से करना है कि ए और बी की वैल्यू इनपुट करेंगे। ये देखें, ए और बी की वैल्यू इनपुट हुई, और उसके बाद चॉइस की वैल्यू आप इनपुट करेंगे। अब ए, बी और सी जो है इनको मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है, और इसमें सी को मैंने इनिशियलाइज किया है 0 पे। अब 0 पे क्यों इनिशियलाइज किया है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप दो इंटीजर इनपुट करेंगे और फिर आप चॉइस की वैल्यू इनपुट करेंगे, जबकि चॉइस को करैक्टर टाइप का डिक्लेयर किया। अब हमारे तीन इनपुट हो गए, दो इंटीजर वैल्यूज एंड अ चॉइस। अगर चॉइस की वैल्यू प्लस हो जाती है तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन केस कि आप चॉइस की वैल्यू प्लस नहीं देते, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वी वुड गो इन दिस एल्स, सेकंड एल्स, if choice is equal to minus, c is equal to a minus b. But if this condition also gets false, then we would go over here, else if choice equal to static, and if this condition gets true, c is equal to a multiply by b. But if this condition also gets false, the control transfer to this else, and it would check the value of choice. If the value of choice is slash, then it would calculate c equal to a slash b. So first of all, first condition would be checked, and if this condition gets true, no other condition would be checked. But if this condition gets false, second condition would be checked, and if the second condition gets false, then third condition would be checked, and if the third condition gets false, then fourth condition would be checked. But in case all these four condition gets false, then control go to this else and would print wrong choice entered. अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपने इनपुट की, और उसके बाद चॉइस की वैल्यू आपने इनपुट की, और चॉइस की आपने कोई एक वैल्यू एंटर करनी है, कोई एक ऑपरेटर एंटर करना है आपने। या तो आप प्लस एंटर करेंगे, या माइनस एंटर करेंगे, या स्टेरिक एंटर करेंगे, या स्लैश एंटर करेंगे, कोई एक ऑपरेटर आपने एंटर करना है। जो भी चॉइस की आप वैल्यू देंगे, कोई भी ऑपरेटर देंगे, तो उससे रेलिवेंट कंडीशन ट्रू होगी, और जो रेलिवेंट कंडीशन ट्रू होगी उससे रेलिवेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ऑपरेटर इनपुट करते हैं जो आपने किसी भी कंडीशन में उसको सेट नहीं किया हुआ,
तो फिर कंट्रोल लास्ट एल्स पे चला जाएगा और वहां पे रॉन्ग चॉइस एंटर्ड का मैसेज आ जाएगा। अब यहां पे सूरत हाल सम टाइम ऐसी है कि आपकी वैल्यू ऑफ सी जो है वो कैलकुलेट होनी है डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस। अब या वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी, या वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, या ये आ जाएगी, या ये आ जाएगी, जो भी आएगी वो कंडीशन के अगेंस्ट आएगी। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो एल्स में रॉन्ग चॉइस एंटर्ड का मैसेज आ जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे और सी की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो अगर तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो फिर उस ऑपरेशन के अगेंस्ट जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई और आपका कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर उस केस में सी की वैल्यू आपकी ज़ीरो रहेगी जो आपने शुरू में सेट की है, क्योंकि सी की वैल्यू कहीं से भी किसी कंडीशन से भी नहीं आएगी। तो जो पहली वैल्यू जहां से सी को आपने इनिशिएट किया उसी वैल्यू से आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो इफ द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 0 it mean none of the condition gets true. So if the value of c is other than 0, it would indicate that some of the operation has been executed depending upon the condition. So let's run the program. As because of multiple apps are being run, so the speed gets slow. Recording, different apps are open, so be patient. Things will get fine very soon. Enter two numbers. जी आपसे नंबर्स जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं। आप कोई से भी दो नंबर एंटर करें। लेट्स से वी हैव एंटर्ड 20
second number, let's say we have enter 5, then enter choice. अब हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस स्टैरिक और स्लैश इनमें से कोई सा भी ऑपरेटर हमने एंटर करना। लेट्स से कि हम ऑपरेटर की वैल्यू एंटर करते हैं दैट इज स्टैरिक, सो द रिजल्ट इज 100। अगर हम ऑपरेटर की वैल्यू प्लस देते तो रिजल्ट 25 आना था, अगर माइनस देते तो रिजल्ट आपके पास 15 आना था। स्टैरिक दिया तो 20, अगर स्लैश देते तो 4 यू वुड गेट। लेकिन अगर आप इन चार ऑपरेटर्स के अलावा कोई सी भी वैल्यू देते, प्लस माइनस स्टैरिक और स्लैश के अलावा आप कोई सी भी वैल्यू एंटर करते, तो जो वैल्यू कैलकुलेट होनी थी वो ज़ीरो होनी थी और उसने साथ में मैसेज भी डिस्प्ले करना है कि रॉन्ग वैल्यू एंटर्ड। लेकिन अगर आपने ये चार जो वैल्यूज़ हैं, चार ऑपरेटर्स हैं, इनमें से कोई से भी आप ऑपरेटर एंटर करेंगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा डिपेंडिंग अपॉन द एंटर्ड ऑपरेटर। एज यू नो कि हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लिए दोनों लैंग्वेजेस को पैरेलल लेके चल रहे हैं, तो मैंने यही प्रोग्राम जावा में भी आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। तो जो लोग जावा को फॉलो कर रहे हैं या जावा में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उनके लिए हम जावा भी साथ साथ कर रहे हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज फॉलो हो रही है, हम पैरेलल जावा भी जो है वो साथ ही कर रहे हैं। एक्लिप जो सॉफ्टवेयर है दिस इज़ गुड फॉर जावा। जो लोग जावा कर रहे हैं वो एक्लिप में अगर काम करना चाहें तो इट्स अ गुड ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट, जो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि आप लोग अपने जो भी मसला, जो भी आप लोगों की क्यूरी हुआ करे वो मुझे सेंड किया करें, आई वुड रिस्पॉन्ड। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों के मसाइल होंगे इंशाल्लाह उसको देखा जाएगा। इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम। इसमें अगर आप लोग इस चीज़ पे गौर करेंगे कि जी हम ऐसा नहीं कर सकते, नेट की स्पीड जो है वो ठीक नहीं आ रही, ऐप का जो है वो मसला आ रहा है, तो फिर हमारे लिए जो है ना ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमें इस मामले में जो है वो चीज़ों को लेके चलना है और इस पे काम करना है। तो थोड़ा हिम्मत से काम करें, इंशाल्लाह यू वुड गेट द रिज़ल्ट। तो थोड़ा आप लोग भी मेहनत करें, जो मसला मसाइल हुआ करे वो मेरे साथ डिस्कस किया करें। देखें जो कि ऐप आपकी काफ़ी हैवी है और साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, इस वजह से उसको जो है वो इतना टाइम लग रहा है। चले, मैं इसके लिए एक छोटा सा क्लिप जो है वो और आपका जो है वो साथ ऐड कर दूंगा और उसको हम 5.1 कहेंगे। अगर इसमें ऐसा नहीं कर रहा, चलें देखें अभी कुछ कर तो रहा है, अगर हो जाए तो बेहतर ही है।
डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लिप अलहदा से इस लेक्चर के साथ ऐड कर दूंगा, उसको हम 5.1 कह लेंगे। आपके उसमें जो है वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, परेशान ना हो। मैं आपके साथ अभी इसको अटैच कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।